you all know about the CUET. Like you are here for this particular session. The CUET is basically an examination which is going to help for the first time, right? So in this particular session of CUET, we're going to know about what kind of GK that going to come in this exam. CUET is basically an examination for all central deemed universities. All central deemed universities, they are going to take a single examination, right? Where you can apply for a particular course. In this paper, you'll get two types of examinable. There will be paper 1 and paper 2. Obviously in paper 1, it will be aptitude-based examination. It is aptitude-based, and in second, in CUET, it is basically subject-oriented. The session will be subject-oriented. Clear? So, subject-oriented and aptitude-based. In this aptitude-based, obviously, the main GK portion, the general, I won't say the GK portion, but I would like to say general awareness, where you have to focus both on static aspect and the current aspect, right? In the general awareness section. Obviously, in the subject oriented, if you are applying for a particular course of humanities, for example, you are going for history, geography, sociology, political science. So these are all humanities subjects, psychology and all. So you have to go through all of the syllabus, especially of 12th board. So if you see the syllabus pattern given by the respective institution, that you have to focus on the subject-oriented portion. You have to focus on 12th board, and the book is specified as NCERT. So वैसे भी NCERT से बाहर तो वैसे कुछ नहीं आता. NCERT is already a very broad book. It is a very, I would like to say कि even the UPSC, when you used to prepare for the UPSC in future, the base of UPSC is NCERT. UPSC खुद यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन है, वो खुद वो बाकी सब बुक्स को वो मतलब इलीगल तो नहीं मैं बोलूंगा, इररेलेवेंट वो मान सकते हैं, बट NCERT को भी वो इररेलेवेंट नहीं मानते, क्योंकि NCERT इज अ गवर्नमेंट बुक, गवर्नमेंट पब्लिशर से निकलती है, तो गवर्नमेंट बुक है, उसमें डेटा है वो सारा ज्यादा से ज्यादा. द डेटा दैट यू विल फाइंड इन द NCERT, दोस डेटा is of basically the government's that it is taken from the government websites and also we cannot say that in UPSC we can in NCERT is a fabricated data और वो अपने मन से डेटा बनाया, ऐसा नहीं होता. So in so basically for the 12th board, the syllabus for the subject oriented is basically 12th NCERT. So for this GK portion, the things that you need to focus. What are the things that you need to focus? Obviously, in GK part, you have to do two things. One is the static portion, right? Another one is the current portion. But if we see the latest trend of any examination, we find current, the current related news much more relevant than the static news. तो स्टैटिक न्यूज इतनी रेलेवेंट नहीं रहती है जितनी करंट ओरिएंटेड न्यूज रेलेवेंट रहती है. मतलब इवन इफ दे आस्क स्टैटिक क्वेश्चंस, दैट स्टैटिक क्वेश्चन विल आल्सो बेस्ड ऑन द करंट अफेयर्स, राइट? फॉर एग्जांपल, they may ask like for the Sri Lankan crisis is very much in news since last 2 months. तो Sri Lankan crisis है, तो they may ask you by which two water bodies India and Sri Lanka is separated, right? अब ये क्या है? This is a geography question. The geography comes into the static part. So whenever they will ask you a question of history, geography, economics, the static portion of of these parts, it will also motivated by the current one. This is the basic difference between the static, how we prepare the static one and the current one. If I compare 10 years ago, right, the examination which used to come 10 years before, in those exams, we need to prepare static portion separately and the current portion separately, because we actually don't know कि भाई वो किस टाइप के वो पेपर्स आ जाएंगे. Clear? Clear everyone? Yes, sir. Okay, great.
thing that we everyone need to focus कि हमको like what Arjuna did in Mahabharata. Arjuna's focus was eye of the fish. So in the same way, we have to focus that eye. What is that eye? The types of question, that is the eye. And the common trend, I would like to say, the common trend, right? This is a common trend. What is a common trend? The common trend is basically current oriented static. Yes, current affair is important, but current oriented static is more important, right? Because current affairs तो सब पढ़ लेंगे, उसमें तो कोई बड़ी बात नहीं है. It is not difficult to read current affairs, but current affairs which is motivated by the static, or the static question motivated by the current affair, that is more relevant, right? That is why I'm trying to explain you how current and static should go hand in hand, right? तो अगर खासकर वो जो न्यूज जो करंट अफेयर्स में बहुत ज्यादा रही है स्टैटिक न्यूज की, उस पे हमको ज्यादा फोकस करना होगा, राइट? लाइक फॉर एग्जांपल इन स्टैटिक क्वेश्चन, व्हाट आर द टॉपिक्स दैट यूजुअली कम्स इन स्टैटिक? द इंपॉर्टेंट वन इज द पॉलिटी, where we need to be where we study about the Constitution of India. Then history, they're all parts of the history: ancient, medieval, and modern, right? Then is economy, where the microeconomy, macroeconomy. Then you will find out geography. Geography, both physical as well as Indian. Obviously, in the Indian geography, your focus is only about the India, the landforms, the plateaus, water bodies, mountain chain, islands of India, Great Indian Plains, the Peninsular Plateau, these kind of things. Geography. Next is art and culture, world affairs. World affair is basically, I would say, it is a current oriented bazada, but they may ask you some question from the world history. वो history में चलो एक part आ गया. They may ask you about the World War I, World War II, Russian Revolution, American Revolution, French Revolution, what कब वो start हुई, कब वो खत्म होती है, about the Cold Wars and all, like these kind of things. And one more important thing is, like, here you will find out international organizations. It has relevance of both static as well as current. How there is a relevance of both of these? Like in international organization, there are two questions again, static. What are the static question? Date of formation. Date of formation, number of members, etc. Or what do you find in the current one? Latest decision and place of meeting. And place of next meeting as well. Place of next meeting as well. Right? So that's why I was telling you how you relate your static GK with the current GK. Like for example, last year or recently in November, G20 meeting held in Rome, and the next meeting in 2023, this meeting is going to held in India, right? So these two things are the current oriented, but they may ask you in which year G20 was formed, or which of the following countries is or are the member of G20, or is or are not the member of G20. But you have to cover up all the aspects. They may ask you about the headquarter of where the headquarter of G20 is located. They may ask you about the precursor of G20, like G7 is the precursor of G20. G7 तो नहीं था, पहले वो G8 हुआ करता था, पर में जब रशिया ने क्रीमिया को एनेक्स किया 2014 में, and Russia was it was thrown out from the G8, and the G7 was formed. And after that, G मतलब यहाँ मतलब क्या है, group. So there are group of 7 and group of 20 countries. Who are these 20 countries?
like 19 other countries plus one is European Union. So who are these 19 countries? These are the top 19 economy plus democratic countries. Economy plus democratic democratic countries. So this is about how they will ask you question from international organization and grouping. Now international organization and grouping इसका मैं थोड़ा सा आपको जरूर आगे मैं बताऊंगा कि इसमें आगे क्या आता है क्या नहीं आता, इसके किस टाइप ऑफ क्वेश्चंस आपको आएंगे, आगे उसके क्वेश्चंस होंगे. And they may ask a question in economic institutions. Now economic institutions is like World Bank, right? IMF, ADB, Asian Development Bank, AIIB. Again the same type of questions. करंट ऑफ क्वेश्चंस कैसे हो जाएंगे कि अगर इन्होंने किसी कंट्री को लेटेस्ट बेल आउट पैकेज दिया है या लोन दिया है या कोई एमओयू साइन किया है, दिस इज द करंट ओरिएंटेड क्वेश्चंस. लाइक जो बहुत ज्यादा न्यूज में रहा, या इनमें से किसी ने कोई रिलीज न्यू इंडेक्स, इफ दे रिलीज एनी न्यू इंडेक्स they may ask you question about this. Next is they in the static one, what kind of question they are going to ask you, like the headquarter. Like they may ask you about the headquarter of the news, right? Where the headquarter is of that particular organization is situated and all. They may ask you a question about that also. So that's why you need to focus on both the current aspect as well as the static aspect of the news, right? They may ask you about the headquarter, date of formation, etc. Right? The next type of question they may ask you about the important awards and honors. Like जो static portion current oriented आते हैं, मैं अभी उसी पे फोकस कर रहा हूँ. और हिस्ट्री ज्योग्राफी हम सबको पता है कि वो तो आती है. मैं ये बताना चाह रहा हूँ कि हमने जीके को कैसे प्रिपेयर करना है यहाँ पे. How we prepare the GK for the CUET so that we gain maximum marks. And believe me, if your GK is weak ना, so it is very much tough for you to crack this exam, right? Very tough for you. इसके बिना कोई गुजारा ही नहीं है. अगर हम बोलेंगे हम जीके वाला सेक्शन छोड़ के चले जाएं, because I know majority of student has very weak GK because we don't have that much of reading habits. We are not reading newspaper on a daily basis. We are not following the news. We are not aware about what is happening around us and all. So actually I know the truth. ये इस चीज को आप भी एक्सेप्ट कर लो, मैं भी बड़ा जल्दी एक्सेप्ट कर लेता हूँ कि भाई वो हमको इतनी नॉलेज नहीं होती. But again, frankly speaking, we cannot succeed or we cannot get successful in this exam until we have a weak GK. So that's why. Next is basically they may ask you a question on awards and honors. Again, the static aspect and the current aspect. Right? So they may ask you a question on the current aspect as well as the static aspect. Like what are the current aspects of the important awards and important honors? Important awards and honors are like they may ask question on latest award given to latest personality or important personality, I would like to say. Important personality. Latest award given to the important personality. And honor is again the same honor. Like for example, any honor given to our Prime Minister, right? I think one and a half years back, our Indian Prime Minister Narendra Modi, he got highest civilian award. He is honored with the highest civilian award of UAE. Right? This is the important one, है ना? Or if Indian, if any Indian government gave any kind of an important honor or important award to foreign dignitary, like
that can also be very important. Like recently, there are again two types of questions that they may ask you: important international awards and national awards, right? International awards and national awards. So obviously, the international awards are like the awards like Nobel Prize, Oscar, Raman Magsaysay Award. Raman Magsaysay Award is also known as Asian Nobel Prize. So they may ask you on this. They may Grammy Awards, Booker Prize. So these are the example of the international award. And what are the national awards? National award includes like Bharat Ratna. It's the highest civilian award in India. Hai Bharat Ratna. Major Dhyan Chand Award. Initially, it was called a Rajiv Gandhi Khel Ratna Award, and its name got changed into Major Dhyan Chand Award. Arjuna Award. Jnanpith Award. It's a very famous award in literature in India. Jnanpith Award. So these are the few examples of the awards that you need to focus especially, right? Because these are very important ones. And again, what kind of static question that may come, like first winner, year in which it started. It is started. Like, or current one, obviously the latest winner. Latest winner. Right? So these are the important awards and honors that you need to focus. If, for example, they may ask you who was the first awardee of Major Dhyan Chand Award. It was at that time it was called the Rajiv Gandhi Khel Ratna Award, but now it's a Major Dhyan Chand Award. Who was the first winner? Can anyone tell me? Who was the first winner of Major Dhyan Chand Award or Rajiv Gandhi? It's the highest sports award in India. Can you tell me? Anyone? Okay, I'll give you the hint. He's a very famous chess player. He's a very famous chess player. अब तो बता दो। तो एक ही चेस प्लेयर का नाम पता है इंडिया में? कौन? विश्वनाथन आनंद. Vishwanathan Anand. Or they may ask you in which year Bharat Ratna awarded for the first time. Awarded first time. First. It was awarded in 1954. Right, for the first time it was awarded in 1954. So that's why you need to focus on the current aspect as well as the static aspect that I was telling you. In the same way, sports. Sports is again important tournaments, like recently it held in which country, or that important tournament is related to which sport. To which sport, or that cup is related to which sport. Like for example, they may ask you Davis Cup. Davis Cup is related to which sport? Can anyone tell me? Tennis. Aslan Shah Cup. Aslan Shah tournament or Aslan Shah Cup. It's hockey. Right? Like these kind of things. These are the static one. And obviously current one, the winner of the team, the winner of the team, or in which country or in which place it recently held. They may ask you important terms used in sport, like for example, in which sport snatch is used. Snatch is used in which sport? Like terms में अगर हम बात करें snatch और stroke or clean, or they may ask you, these are different. Gully. Like snatch is used in again weightlifting.
Clean is also used in weightlifting. Stroke is used in swimming. Gully is used in cricket. Slip is used in cricket. Pot and hole is very commonly asked. Pot and hole is used in, कोई बता सकता है? Pot and hole. Pot and hole is used in billiards. So these kind of questions that they may ask you in your paper. Then next one is sobriquets, places and persons. Sobriquets means the other, for example, you must have seen which city is called as Pink City. ये सबको पता होगा. Pink City, Jaipur. So basically, for Jaipur, Pink City is sobriquet. This is called as sobriquet. This is called as sobriquet. So Pink City is a sobriquet for Jaipur. है ना? In the same way. Which person is known as Frontier Gandhi? Frontier Gandhi. Very important. A very commonly asked again. Was called as Khan Abdul Ghaffar Khan. Very great freedom fighter. A great Gandhian also. Khan Abdul Ghaffar Khan. He is known as Frontier Gandhi. So these kind of questions that usually ask in these examinations, but obviously the level is basically, it will remain at the medium, easy to moderate level. It will not go high as like a UPSC level. What I am expecting, it will not go beyond that level. It will only be at the moderate level. If I need to rate out of 10, so I rate UPSC question 8 to 10 out of 10. है ना? In the same way, if you ask me CUET, I would like to rate 4 to 6 out of 10, or less than that, or I would say 2 to 6. 2 to 6 out of 10. So these kind of questions that are very much common. So countries, capitals and currencies. There are chances, पहले बहुत पूछते थे, now there are chances that they may ask you very, obviously the countries and capitals, it will not be a very, that kind of a tough one. Oh, sorry, that kind of an easy one. It will be a tough one. Like African countries, they may ask you about any African country or South American country, because this South American country, and obviously they will ask you country and capital of that country which is in news. Again, country and capital, it will be of that country which is in news. So just go through the news of last 4 to 5 months, and any country which is very much in news, you should know about the currency, you should know about the capital location of the country or the neighboring country. Like for example, the Ukraine is very much in news, so you all should know about the capital of Ukraine. So Kyiv is the capital of Ukraine, K-E-I-E-V. Kyiv is capital of Russia is Moscow, है सबको पता है. Like these kind of things. So in some paper they may ask you about the business GK. Business GK मैं ये तो नहीं बोलूँगा सब में, मतलब there are chances that 1 or 2 questions that may ask you business GK, like latest acquisitions and mergers, right? Any like for example, recently PVR and Inox, they got PVR acquired, or you can say that they both get merged. Now Inox will going to know by PVR. है ना? So this is called as acquisition and merger, and again, which is very much in news. The big firms, obviously, the small firms is not in very much in news. So you need to focus on the big sharks or big whales. So latest CEOs, business, like for example, Twitter. There's a new Indian, Twitter CEO. He's an Indian. So he was Parag Agarwal. Like these one, especially focus on the international business companies. This business group, where the Indians are CEO, right? Like they are very much important. Parent companies and their co-brand. And they may ask you, Kia is the co-brand of which company? Kia la company nahi hai, Kia is the co-brand of Hyundai.
Kia is the co-brand of Hyundai. Snapchat or Instagram. Instagram is co-brand of which company? It is a co-brand of Facebook. Jaguar is a co-brand of which company? Jaguar is a co-brand of Tata. Like these kind of questions that they may ask you in your paper. So till here everyone is clear? Yes, sir. Great. If someone has any doubt, you are free to ask me at any time, okay? Like these are some important international organizations and groupings and institutions. Like we all know about the United Nations. It was formed in 1945. I'll explain you in a very brief way. Obviously we have a time constraints, so I'll explain you in a very brief manner. I'm not going into that depth, right? So they may ask you question on the United Nations. Like for example, United Nations was formed in 1945. So 1945 United Nations it was formed, and its headquarters is in New York, है ना? इसको माइंड में कैसे रखेंगे? ओके, अब ऑब्वियसली ये बहुत बड़ी चीजें हैं, तो भाई हमारे को भूल भी जाती हैं कई बार, मानते हैं ये बात आपको। माइंड में रखने के आपके दो तरीके हैं इसके, और ये अगर आप तरीका यूज करोगे आप उसको लाइफ लॉन्ग तक आप उसको माइंड में रख सकते हो। व्हाट आर द टू थिंग्स? फर्स्ट वन इज रिवीजन, सेकंड वन इज टेस्टिंग। Revision and testing are these two things where I would like to say that this can help you to remember anything in the world for anything, any book, any currency, capital, anything, any date, even the date. You can only do it by revision and testing. Enough. Try to give at least 2 revisions at least 2 tests. After every revision you need to give a test, enough. At least 2 revision and 2 tests after of every topic. 2 revisions and 2 tests of every topic. This is how you can what we call remember anything for a long period of time. इसको मैं बोलता हूँ कि revision 1, revision 2, testing 1 and testing 2. So these are the 2 ways. मतलब and one thing more I forget to tell you, that is the consistency. Consistency is the only thing where it helps you to improve your GK. You know, there are 2 subjects. One is the GK, another one is English. It was a verbal. English or verbal or GK, these subjects only need the thing that is called as consistency. If you have because the graph of these 2 subjects rise very slowly. It rises very slowly, but as soon as it rises, it never comes down. But on the other hand, if you start practicing quant, right, or reasoning, the plus point of quant is if you practice quant for even 3 months, na, you will have 3 months में again वो बड़े अच्छे तरीके वाला मैं बोल रहा हूँ. So if you practice quant or reasoning for 3 months, you will have a very good quant, very good and genuine type of a quant, है ना, that your level of that quantitative aptitude. But as soon as you leave quant or reasoning, it will again come down at a very steep slope, because आपने वो practice छोड़ दी हुई है. बट जीके और इंग्लिश ऐसे 2 सब्जेक्ट हैं, अगर आप इसको एक बार पढ़ना शुरू कर दोगे ना, उसकी रीडिंग वो उसका एक बार ग्राफ ऊपर आ गया तो इट नेवर कम्स डाउन. दिस इज द प्रो एंड कॉन. ऑब्वियसली जीके और इंग्लिश को बढ़ाने के लिए एटलीस्ट यू हैव टू गिव अब मैं आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट दिस कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन, बट मैं आपको लाइफ लॉन्ग बोल रहा हूँ कि अगर आप चाहते हो कि भाई आपकी क्विजेस में आपका you get very good marks in quizzes, if you have interest in quizzes, if you have interest in debates, if you have interest in group discussions and all, if you have interest in knowing everything, the curiosity to learn, then I would say you have to give at least 1 year in both of these subjects.
अगर हम एग्जाम ओरिएंटेड करें तो भाई वो भी अगेन 2-3 महीने में नंबर लेने लायक आप अच्छा प्रिपेयर कर सकते हो. बट if you need to have a very good amount of knowledge where you can debate on any particular topic, where you can talk on anything, where you can give speech on anything, debate on anything, then I would say that you have to give at least 1 year. And in the same case of English, because English, when many students have very weak grammar, RC and all, because RC can only be improved by thorough reading, by the consistent readings. So GK is also the same way. It can only be improved by thorough and consistent readings. And obviously testing and revision is there. But quant and reasoning का plus point ये है कि ये prepare बहुत जल्दी होता है. मतलब we prepare quant and reasoning, our mind picks it up very quickly. But the con is it comes down very quickly also. And जैसे chemistry में ना, there is a formula in chemistry, it is called as solid heats up quickly, cools down quickly, and liquid heats up slowly, cools down slowly. ये बोलते हैं chemistry में. तो आप समझो कि रीजनिंग और जो क्वांट है इट इज अ सॉलिड, एंड ये जो जीके और इंग्लिश है these are the liquids, right? So this is the thing. So till here everyone got understood? Everyone got understood? Yes sir, all clear. Okay, all clear. ऊपर से क्लियर के वैसे क्लियर? नहीं सर, ऊपर से तो नहीं. ऊपर से तो नहीं क्लियर है, मतलब ऑल क्लियर है, मतलब जो टॉपिक समझाया वो वाला क्लियर है ना? हाँ मैं एक्सपेक्ट करके चल रहा हूँ. ठीक है, तो मतलब अगर आपको बीच में कहीं किसी पे डाउट भी होता है ना, डोंट फॉरगेट, डोंट worry to ask me that thing. You can ask me at any, you can stop me at that very particular moment, and you can ask me at any time. Clear? Yes sir. Okay, great. ओवरहेड ट्रांसमिशन हो रही है अमित, सब कुछ समझ नहीं लग रहा? डोंट वरी, इट इज योर फर्स्ट सेशन. फर्स्ट सेशन है आपका. ऑब्वियसली मैं आपको पहले बता चुका हूँ कि पहले सेशन में यार डोंट जज योरसेल्फ, डोंट जज योरसेल्फ. वही मैं बता रहा हूँ कि ऑब्वियसली इट इज द फर्स्ट सेशन. इफ यू विल जज योरसेल्फ कि मेरे को पहले सेशन में कुछ नहीं समय लग रहा, तो फिर तो भाई इट्स वेरी डिफिकल्ट, क्योंकि ये सब्जेक्ट ही बहुत वास्ट है. मैं एक्सपेक्ट करता भी नहीं हूँ यार कि आप उसको एक बार आप क्लास में आपको सब कुछ आ जाए. मैंने आपको पहले बोला कि ये बड़ा स्लोली चलेगा. मैं अभी आपको जो सिखाने की कोशिश कर रहा हूँ ना, मैं आपको ये सिखा रहा हूँ कि आपको जीके में किस में फोकस करना है, कि वो अर्जुन के वो मछली वाली जो आंख है वो कौन सी है. मैं ये तो बोल ही नहीं रहा ना कि आपको पूरे का ये करना, प्रिपेयर करना पड़ेगा. मैं तो मछली की आंख बोलो, मैं मछली की आंख कौन सी है, कि हमको स्टैटिक पोर्शन एंड जो करंट पोर्शन है उसको कैसे रिलेट करना है. हम आपको बस उस चीज पे फोकस करो, है ना. नेक्स्ट वन इज G20. G20 was formed in 1999. ये छोटे मोटे पॉइंट आप लिखते रहो साथ साथ में. इसकी रिसेंट जो मीटिंग हुई है वो रोम में होके हटी है. 2023 में इसकी जो मीटिंग होगी वो कहाँ पे होगी? इंडिया में. ठीक है, अगली बात करेंगे ब्रिक्स की. ब्रिक्स की जो फुल फॉर्म है क्या है? ब्राजील, रशिया, इंडिया, चाइना एंड साउथ अफ्रीका, है ना. इसके जो एक एक लेटर है पहली कंट्रीज का, वही इसकी फुल फॉर्म लगी है. 2007 में ये बनी पहली बार. 2007 में जब ये बनी तब इसका नाम ब्रिक हुआ करता था. जो साउथ अफ्रीका है वो 2010 में ऐड होती है, तब उसका नाम बन गया ब्रिक्स. ठीक है जी. अगली बात करेंगे नाटो की. नाटो वेरी इंपॉर्टेंट, बड़ा न्यूज में रहा है. यूक्रेन रशिया क्राइसिस पे इसकी फुल फॉर्म है नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन. 1949 में बना था. पर्पस क्या था? रशिया को कंटेन करना उस रीजन. क्वाड, क्वाड्रिलेटरल अलायंस, क्वाड अलायंस बोला गया इसको. 4 कंट्रीज है इसमें. क्वाड का मतलब क्या है? चार कॉर्नर. कौन कौन सी? यूएसए है, इंडिया है, चाइना है एंड ऑस्ट्रेलिया. सॉरी, चाइना नहीं है, जापान है एंड ऑस्ट्रेलिया है. मकसद इनका क्या है? चाइना को कंटेन. जैसे नाटो का मकसद क्या था? रशिया को कंटेन करना. क्वाड का मकसद क्या है? चाइना को कंटेन करना है.
SCO की फॉर्म क्या है? शंघाई कॉर्पोरेशन ऑर्गेनाइजेशन। अब इसका जो मकसद है, इसका जो हेडक्वार्टर है शंघाई में तो नहीं होगा चाइना में, इसका जो हेडक्वार्टर है बीजिंग में है। तो इस इन ऐसे क्वेश्चन में कभी कंफ्यूज नहीं होना। एशियान में एसोसिएशन ऑफ साउथ ईस्ट एशियन नेशन 1966 में ये ऑर्गेनाइजेशन बनी। इंडिया इसका मेंबर नहीं है, सिर्फ टोटल 10 मेंबर कंट्रीज है इसकी। ऑकूस ये भी बड़ा रिसेंटली न्यूज में रहा है। ऑस्ट्रेलिया, यूएसए और यूके 3 कंट्रीज हैं। ये क्या करेंगी? न्यूक्लियर सबमरीन की टेक्नोलॉजी ऑस्ट्रेलिया को ट्रांसफर करेंगी ये दोनों कंट्रीज। अब यूएसए यूके के पास न्यूक्लियर सबमरीन है, तो न्यूक्लियर सबमरीन की जो टेक्नोलॉजी है वो ऑस्ट्रेलिया को ट्रांसफर करेगी। मकसद क्या है ऑस्ट्रेलिया को ट्रांसपोर्ट करने का? चाइना को कंटेन करेंगे। वो भी दुश्मनी चल रही है ना यूएसए की चाइना के साथ, ऐसे ग्रुप्स बना रहे हैं। सार्क, साउथ एशियन एसोसिएशन ऑफ रीजनल कॉर्पोरेशन, कौन से साल में बनती है? 1985 में बनी। इंडिया भी इसका मेंबर है, बट आजकल इसकी मीटिंग वगैरह हो नहीं रही। 2016 में जो सर्जिकल स्ट्राइक की थी ना, उड़ी जो मूवी आपने देखी होगी विक्की कौशल की, उड़ी वाली मूवी के बाद, मतलब उस इंसिडेंट के बाद, बेसिकली मूवी के बाद तो नहीं, उस सर्जिकल स्ट्राइक वाले इंसिडेंट के बाद इसकी कोई भी मीटिंग नहीं हुई, क्योंकि पाकिस्तान इसका मेंबर है। तो इनको चाहते हैं कि पाकिस्तान, वी शुड आइसोलेट पाकिस्तान फ्रॉम द रीजन। बिम्स्टेक, ये है बे ऑफ बंगाल इनिशिएटिव, मल्टी सेक्टरल टेक्निकल एंड इकोनॉमिक कॉर्पोरेशन, है ना, 1997 में बनती है। इसने क्या किया? सार्क को ओवरटेक कर लिया, इसलिए ये आजकल बड़ा इंपॉर्टेंट है। अभी कुछ कह लो कि क्या 2-3 हफ्ते पहले, पिछले महीने की बात है, मतलब मार्च में इसकी जो मीटिंग हुई है श्रीलंका में हुई है। तो ये क्या हो गया? आपका करंट एस्पेक्ट हो गया। ओपेक, ये ऑयल प्रोड्यूसिंग एंड एक्सपोर्टिंग कंट्रीज। इसका जो हेडक्वार्टर है वो है वियना में। और यही जो कंट्रीज है जो पूरी दुनिया की जो तेल की सप्लाई है, तेल का प्राइस है, वो डिसाइड करता है ना। तो ये है। तो इकोनॉमिक इंस्टीट्यूशन में मैंने आपको ऑलरेडी बताया, वर्ल्ड बैंक, IMF, इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड, AIIB, एशियन इन्वेस्टमेंट इंफ्रास्ट्रक्चर बैंक, वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन, न्यू डेवलपमेंट बैंक और वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम। इनके बारे में ये बड़ी इंपॉर्टेंट कुछ इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस है। मैं ज्यादा इस पर टाइम ना वेस्ट करते हुए मैं आपको इसके क्वेश्चंस की तरफ लेके जाऊंगा, कैसे आपको क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, ताकि आपको रियल टाइम सिनेरियो हो। आप ऐसे ऑर्गेनाइजेशन बता देंगे, दोनों तरफ बता देंगे, उसको बोलेंगे मैच द फॉलोइंग। जैसे वर्ल्ड बैंक का हेडक्वार्टर कहाँ पे है? वर्ल्ड बैंक का हेडक्वार्टर है वॉशिंगटन में। नाटो का हेडक्वार्टर है ब्रुसेल्स में। ब्रुसेल्स की कैपिटल है बेल्जियम की। एमनेस्टी इंटरनेशनल का है लंदन में। FAO का है रोम में। यूरोपियन सेंट्रल बैंक का है पेरिस में। यूरोपियन सेंट्रल बैंक है पेरिस में। और ऑर्गेनाइजेशन ऑफ इकोनॉमिक कॉर्पोरेशन है फ्रैंकफर्ट में। फ्रैंकफर्ट पड़ता है आपका नीदरलैंड, ठीक है, बड़ा लंबा शहर है नीदरलैंड में। सो दीज आर द these kind of questions, आपको रियल टाइम में this type of questions that they will ask you. Clear? This is also one question, which of the following is not a member of European Union? अब रिसेंटली क्योंकि ब्रेक्सिट हुआ, पहले 28 हुआ करती थी इसके मेंबर कंट्रीज। ब्रेक्सिट होने के बाद ब्रिटेन, मतलब ब्रिटेन का एग्जिट होना, किसमें से? यूरोपियन यूनियन में से। अब आजकल कितनी होगी? 27। उनमें से कौन सी कंट्री है? ऑब्वियसली सारी यूरोपियन कंट्रीज है ये, पर सारी की सारी यूरोपियन कंट्रीज आर नॉट मेंबर ऑफ यूरोपियन यूनियन। तो नॉर्वे इज नॉट अ मेंबर ऑफ यूरोपियन यूनियन। बाकी जो स्वीडन, फिनलैंड, डेनमार्क, ये सारी की सारी जो है वो यूरोपियन यूनियन की मेंबर है। इंपॉर्टेंट अवार्ड्स, भारत रत्न, गैलेंट्री अवार्ड, ये मैं आपको ऑलरेडी उसे बता चुका हूँ। ज्ञानपीठ, सरस्वती, बुकर प्राइज, नोबेल प्राइज, ये लिटरेचर के बड़े इंपॉर्टेंट अवार्ड है। फिल्म अवार्ड्स के बारे में बात कर सकते हैं, वो आईफा, ठीक है, नेशनल अवार्ड रिसेंटली किस किस को मिला है। तो दिस काइंड ऑफ क्वेश्चन। इंटरनेशनल अवार्ड लाइक ऑस्कर, नोबेल, इंदिरा गांधी पीस प्राइज, पुलित्जर नहीं है, पुलित्जर आएगा, तो पुलित्जर प्राइज, ठीक है। रामन मैग्सेसे अवार्ड, इस रामन मैग्सेसे अवार्ड इज आल्सो नोन एज नोबेल प्राइज ऑफ एशिया, ना। तो रिसेंटली इसको किसको मिला है? तो like these kind of a questions. उसके बाद like this is the question, who is the last president as of now received the भारत रत्न? पहली बार यहाँ पे हम थ्योरी ऑफ एलिमिनेशन लगा सकते हैं। मदन मोहन मालवीय जी कभी हमारे प्रेसिडेंट नहीं रहे। अटल बिहारी वाजपेयी, भारत रत्न तो मिला हुआ है बट वो PM रहे हैं, तो प्रेसिडेंट तो नहीं रहे। प्रणब मुखर्जी रहे हैं, प्रतिभा देवी पाटिल भी रही है। अब ये 2 ऑप्शन बचे। प्रतिभा देवी पाटिल को कभी भारत रत्न नहीं मिला,
तो राइट आंसर इज प्रणब मुखर्जी। जो रिसेंटली लास्ट जो भारत रत्न मिला वो इन्हीं को मिला 2018 में, उनकी वैसे डेथ के बाद ही मिला था। तो स्पोर्ट्स में आई ऑलरेडी टोल्ड यू स्पोर्ट्स में किनको फोकस करना है, इंपॉर्टेंट कप्स टर्म्स फॉर स्पोर्ट्स, पर्सनालिटीज इन विच आर इन न्यूज। अब जैसे अगेन मैच द फॉलोइंग बैडमिंटन में कौन सा इन फॉलोइंग द दिस इज रिलेटेड टू दैट पर्टिकुलर स्पोर्ट, जैसे बैडमिंटन BWF वर्ल्ड चैंपियनशिप, हॉकी में रंगास्वामी कप, टेबल टेनिस में बामा बबलीक और फुटबॉल में ड्यूरेंट कप। सो दीज आर द इंपॉर्टेंट स्पोर्ट्स दैट दे मे आस्क यू। अब मैं डायरेक्टली क्या करता हूँ, क्वेश्चन में शिफ्ट होता हूँ। जो पिछले साल कुछ बड़े इंपॉर्टेंट कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन में जो क्वेश्चंस आए हम उस पर चलते हैं। इसमें हमारे ना सारे कवर अप हो जाएंगे, द स्टैटिक एस्पेक्ट भी इसमें कवर अप हो जाएगा और करंट एस्पेक्ट भी इसमें कवर अप हो जाएगा। The which of the following is not the objective embodied in the preamble of the constitution? preamble क्या होता है? It like a, जैसे किसी बुक को हम कोई नॉवल पढ़ते हैं, नॉवल के सामने प्रीफेस होता है ना, प्रीफेस tells you what are the things that we are going to provide you in that book. The same way constitution has a preamble in which the preamble says what are the things that we are going to provide to the citizen of the country. तो सबसे पहली जो कंट्री थी जिसके पास प्रियम्बल था वो था यूएसए की। तो क्वेश्चन पूछा कि इनमें से कौन सी कंट्री, कौन सी चीज प्रियम्बल में नहीं है? लिबर्टी ऑफ थॉट बिल्कुल है, लिबर्टी ऑफ मूवमेंट बिल्कुल है, लिबर्टी ऑफ बिलीफ बिल्कुल है। सॉरी आपको पूरा एक्सप्लेन कर देता हूँ। जैसे प्रियम्बल में जैसे जस्टिस, सोशल, इकोनॉमिक, पॉलिटिकल, लिबर्टी ऑफ थॉट है ना, तो लिबर्टी जो है वो कौन कौन सी है? मूवमेंट है, सॉरी मूवमेंट नहीं है। तो लिबर्टी कौन सी है? लिबर्टी ऑफ थॉट, एक्सप्रेशन, बिलीफ, फेथ एंड वर्शिप। ये हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में लिबर्टी प्रोवाइड की। जस्टिस किसकी दी हुई है? इससे पहले जस्टिस आता है, जस्टिस सोशल, इकोनॉमिक एंड पॉलिटिकल। अब यहाँ पे देख ले तो लिबर्टी किसकी है? थॉट की बिल्कुल है, बिलीफ की बिल्कुल है, एक्सप्रेशन की बिल्कुल है, मूवमेंट की नहीं है। तो राइट आंसर इज विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट, यहाँ पे लिखा हुआ है ना, नॉट वर्ड यूज किया, तो बी इज द राइट आंसर, बाकी इज द करेक्ट। तो ये रेडिक्लिफ कमेटी जो अपॉइंट की थी किसके लिए थी? वेरी इंपॉर्टेंट, रेडिक्लिफ कमेटी अपॉइंट की गई थी जब इंडिया पाकिस्तान का पार्टीशन हुआ था। पार्टीशन में, इंडिया पाकिस्तान के पार्टीशन में कमेटी बनी थी जिसका नाम था रेडिक्लिफ कमेटी। इसीलिए इंडिया पाकिस्तान की लाइन को रेडिक्लिफ लाइन बोला जाता है, रेडिक्लिफ लाइन बोला जाता है। तो क्या था? टू ड्रॉ द बाउंड्री बिटवीन इंडिया एंड पाकिस्तान, दिस इज द करेक्ट आंसर। ऐसे ही इंडिया चाइना के बीच में, इंडिया चाइना के बीच वाली लाइन को बोलते हैं मैकमोहन लाइन, मैकमोहन। इंडिया अफगानिस्तान, इसको बोला जाता है ड्यूरेंट लाइन। ये सब गोरे बना के गए हैं ब्रिटिशर्स। This is all the work which is done by the Britishers. So who in India has the power to summon, prorogue either house of the parliament? तो summon मतलब क्या है? Call the parliament or call the session of the parliament। जो कानून बनते हैं उसको call the session। हाँ, तो prorogue का मतलब क्या है? End the session, है ना। तो जो बुलाता है वही तो एंड करेगा, तो वो करते हैं प्रेसिडेंट। तो प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया हैज द पावर टू प्रोरोग और समन द हाउस ऑफ द सेशन ऑफ द पार्लियामेंट। आगे चलते हैं। Which of the following is a regenerative organ of the human body? इनमें से कौन सा है जिसको मतलब एक बार हम काट देंगे, जैसे लिजर्ड है, लिजर्ड को काट देते हैं तो उसकी पूंछ को काट दो, दोबारा उसकी नई पूंछ आ जाती है, जैसे रीजनरेटिव ऑर्गन। जैसे ह्यूमन बॉडी हैज वन रीजनरेटिव ऑर्गन, कौन सा है वो? लीवर। लिवर, यस, लिवर इज द रीजनरेटिव ऑर्गन एंड लिवर इज आल्सो द लार्जेस्ट ग्लैंड। ऐसे भी पूछ सकते हैं, द लार्जेस्ट ग्लैंड। नेक्स्ट वन इज Kathakali. Now this question is from the art and culture. So a dance form Kathakali is from basically which state? So there are basically 8 classical dance forms, है ना। तो classical dance forms जो हमारे गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने that they had decided, Kathakali is one of them. तो Kathakali is a dance form of Kerala. तमिलनाडु का है भरतनाट्यम, महाराष्ट्र का कोई भी नहीं, आंध्र का है कुचिपुड़ी। In the same way, Kathak is there. Kathak is of UP. Satariya is of Assam. Odissi is of Odisha. Manipuri is from Manipur. These are the classical dance forms. This one is Rowlatt Act, also known as Black Bill, which was passed in which year? तो Rowlatt Act का कसूर क्या था? आज के दिन बड़ा इंपॉर्टेंट है। तो what happened today? This is the 13th of April. क्या हुआ था बैसाखी वाले दिन पंजाब में? जालियांवाला बाग।
गुड, जलियांवाला बाग। तो जलियांवाला बाग वाज द रिजल्ट ऑफ रॉलेट एक्ट। मतलब क्या? नो अपील, नो वकील, नो दलील। So that means anyone can be put behind the wall without any kind of a trial. So it can, 1919. yes, so it was held in 1919। बस 1919 में जलियांवाला बाग हुआ। तो 19 सबने वो मूवी तो देखी होगी, विकी कौशल की, सरदार उधम सिंह, उसमें वो दिखाया गया। तो विशाखा जजमेंट इज सेट टू गाइडलाइंस टू डील विद विच केस। ये बड़ा पुराना केस हो गया, बट ये जजमेंट आई थी सुप्रीम कोर्ट की, इसलिए मैंने ये क्वेश्चन डाला है। They may ask you question over this. It is basically a sexual harassment. A sexual harassment basically at workplace. यहाँ पे एक word missing at workplace। यहाँ पे विशाखा जजमेंट केस आता है। आगे चलते हैं। Who among the following was known as Frontier गांधी? ये मैंने अभी आपको बता भी दिया था, याद है कौन थे फ्रंटियर गांधी? अब्दुल जफर खान। जाफर नहीं, गाफर, जी गाफर, GHAFR। तो खान अब्दुल गाफर खान, he was also known as Frontier Gandhi because he was a true Gandhian। तो बड़ी उनकी वो पॉलिसीज को वो फॉलो करते थे। अगली बात है द बुक पॉवर्टी एंड अन ब्रिटिश रूल इन इंडिया। इट वाज रिटन बाय हूम? इट वाज रिटन बाय दादा भाई नारोजी। ये पहली बुक थी, पॉवर्टी एंड अन ब्रिटिश रूल इन इंडिया। The first book which tells Indians that how Britishers are looting India's wealth। So the first book that how Britishers were looting India's wealth, how they are investing, how they are looting the India's money, and they are investing the same money in their own country। So this was a very first time when any Indian, you can say that, tried for the first time to educate the Indians। So he was a Dada Bhai Naroji, a very famous freedom fighter, and he was also known as Sobriquety's Grand Old Man of India। He is also known as Grand Old Man of India। And one is the Gopal Krishna Gokhale, GK Gokhale। He was also twice or thrice he was the president of International Congress। He was also known as political guru of Mahatma Gandhi। He was a political guru of Mahatma Gandhi। There were two political gurus of Mahatma Gandhi. One was Gopal Krishna Gokhale, and the one was Leo Tolstoy। He was not obviously Indian; he was a European। So Leo Tolstoy. These were the two, you can say, the political guru of Mahatma Gandhi। And Bal Gangadhar Tilak, he was also known as Lokmanya Tilak, one of the very famous extremist leader from Maharashtra, Nagpur। And Bal Gangadhar Tilak. Next one is dash is a permit which allows country to produce a certain amount of carbon emission. It is called as carbon credit। Carbon credit where means there is a particular permission of the government, by the international bodies, the particular permission of the government that they can emit carbon। But वो क्या होता है कि if you are emitting emission of carbon, you have to set up the equal amount of renewable project। If you have a more number of renewable project, then you have a permission to emit carbon dioxide। This is a carbon credit। Clear? So Operation Flood, it was launched in 1970। It was related to what? So basically it was related to dairy production, dairy development। So here it was also known as White Revolution। White Revolution, and this Operation Flood, and it was bought by, and the father of White Revolution, he was known as Dr. Varghese Kuran। So it is basically for the dairy development, dairy production, and all to increase the dairy production in India। Next, which indicators are used by the International Food Policy Research Institute to compute the global hunger index? अगर global hunger index को अगर आपको measure करना है, तो what are the things that you need to focus first? One is the undernourishment, yes, child stunting। Child stunting का मतलब क्या है कि the growth of child is not according to the age, है ना। कई बच्चों की आपने देखा होगा age, they are 17, 16 years old, but they seems to be only 11 or 12 because their bodily growth or a weight growth is not up to that level। That is called as child stunting। That is child, because they are not getting that particular
that particular amount of, you can say that nutrition or minerals. So that's why their body, the growth of that body is not up to that level. Next one is child mortality. Child mortality is how many children is getting birth and how many they are, getting killed out of per 1,000. This is called as child mortality. In India, there are 5 per 1,000. But if the 1,000 children are getting birth, so 5 children they get died, before they are before they cross the age of 1. Before becoming the age of 1, they died. So it is at the 5. This is a very good question. So this is a statement-based question. Like this is again the logic that you need to apply. So consider the following 3 statements, indicate which of the following are correct. So sex is a biological concept. Gender is a social construct. This is definitely true. So sex, whether it's a female or a male, it is a biological concept. And obviously, female and a male is a social construct also. Na? For example, you are going to a toilet. So there is a separate toilet for the female and a separate toilet for the male. So it's a social construct that no one will going to use the same toilet. So that gender is a social construct. Okay, this is a true statement. Now, अब यहाँ पे theory of elimination लगा दो कि जहाँ पे 1 नहीं है उसको eliminate कर दो. जैसे D में 1 नहीं है उसको बाहर निकालो, B में 1 नहीं है उसको बाहर निकालो. बचे कौन से? A और C में से ही इसका आंसर है. तो sex is a natural or a biological feature. बिल्कुल सही बात है. Gender is a cultural and learned feature. Both terms means the same and can be used interchangeably. No, they are the same, but they cannot be used interchangeably. Cultural है वो दूसरा social है. तो these are learned feature. So 1 and 2 is the correct. Next one is which international body benchmarks countries a global gender gap index. मतलब है कि which body among these 4 they release the global gender gap index. It is always released by World Economic Forum, right? Next one, a low sex ratio in a particular place indicates what? मतलब एक एरिया में अगर बहुत ज्यादा पॉपुलेशन बढ़ जाएगी तो उसके क्या कारण है? तो फर्स्ट रीजन इज बर्थ रेट ज्यादा है. सेकंड कारण क्या है? माइग्रेशन ज्यादा है. माइग्रेशन ज्यादा है. अगर लेस पॉपुलेशन है वहां पे, अगर वहां पे पॉपुलेशन डिक्लाइन हो रही है तो क्या 2 कारण होंगे? डेथ रेट ज्यादा होगा, अगेन माइग्रेशन भी ज्यादा होगा. माइग्रेशन यहाँ पे माइग्रेशन मतलब क्या? इमिग्रेंट. मतलब आना. वहां पे कौन से होगा? एमिग्रेंट मतलब एग्जिट होना. ई से एग्जिट से याद रखना एमिग्रेंट. यहाँ पे एमिग्रेंट्स ज्यादा होंगे तब वहां पे उस एरिया की पॉपुलेशन कम होगी. तो यहाँ पे अगर किसी एरिया में लो सेक्स रेशियो है, सेक्स रेशियो मतलब मेल और फीमेल के वहां पे डिफरेंसेस बहुत ज्यादा हैं, तो वहां पे क्या होगा? अब प्रैक्टिस ऑफ सिग्निफिकेंट सेक्स सेलेक्टिव फिटोसाइड. बिल्कुल, कि फीमेल की फिटिसाइज हो रहा है, फीमेल को चुन के मतलब टेस्ट करके और क्या सेक्स स्पेसिफिक टेस्ट करके उनको मारा जा रहा है. एंड बोथ मेल इन माइग्रेशन. बिल्कुल ठीक है कि मेल की इन माइग्रेशन हो रही है. So these are the 2. So both of these statements are correct. So the right answer is C. Both of the above. Clear, everyone? So these are the things that you need to focus while preparing up. You can say that current affairs. So or the GK for the CUET. So if someone wants to ask me something, you are free to ask. You want to ask me something? No, sir. Yeah. No, sir. Okay, great. So if you don't have any doubt, then all the best for your paper. Prepare karte raho, do revision, do give your testing and all. So I'll meet you in the next class. So I'm signing off now. Thank you. Okay, sir. Thank you.